Now today we will see how respiratory system is being protected through the physical barrier of immune system. This is a respiratory system. It is the upper respiratory part, it is middle one, and this one is the lower respiratory part. You usually inhale the air through nostrils, it will go to pharynx and then to the lungs, and at the end there will be alveolar present. Throughout this system there is a protective mechanism which protects the entry of microorganism. It is believed that minimum, like in respiratory system we inhale the air, so minimum 8 microorganism is trying to enter per minute. So throughout the day typically you are inhaling 10,000 microorganisms, but these microorganisms are, once it is inhaled, they are deposited to the moist and skinny mucosal surface which is present in the nostrils. जैसे ही आप उसको इनहेल करते हो, इस नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो लिक्विड मैकेनिज्म्स की मॉइस्चरिंग एनवायरनमेंट वाला रहता है, म्यूकस सिक्रेटेड एनवायरनमेंट रहता है, उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रैप हो जाते हैं. प्लस हियर इन दिस नॉस्ट्रिल हेयर्स आर प्रेजेंट, सो वो हेयर्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं. सेकेंड थिंग, दिस नॉस्ट्रिल इज हैविंग अ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर. दिस सीलिया हैज़ अ मूवमेंट कि जो जिस मूवमेंट की वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एंटर होते हैं, दे विल गो टू द फेरिंग्स. हियर दे विल गो टू द फेरिंग्स एंड आफ्टर दिस यू कैन रिमूव दैट फ्रॉम थ्रू द योर माउथ. जो हम कफिंग करते हैं उसमें ट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप थूक देते हो. इसलिए कहा जाता है कि इफ़ यू आर डूइंग कफिंग यू शुड नॉट स्पिट एनीवेयर, otherwise it can create a trouble, right? So the movement of cilia is such that कि जो microorganisms trapped है वो mucus के अंदर, they will go to pharynx and through this pharynx आप लोग उसको splitting के through जो है वो release कर सको, right? Microbe larger than 10 micrometer is usually trapped in hair and cilia. In cilia the movement is such a way that through nasal cavity it will reach to the pharynx, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया, and you can expel it through the mouth. Clear? Now coughing and sneezing are the reflection of immune system. वो physical barrier आपका respiratory tract ट्राई करता है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फोर्सफुली लंग, नोज, माउथ के थ्रू जो है वो रिमूव कर दो. यूजुअली जो सलाइवेशन होता है दैट वॉश्ड आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द माउथ एंड नेजोफेरिंजियल रीजन. सो दिस इज हाउ द सिस्टम इज. स्नीजिंग, कफिंग, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ इम्यून सिस्टम. योर इम्यून सिस्टम इंड्यूस यू टू डू दैट सो दैट यू कैन एलिमिनेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी. ओके. सेकेंड, पहला 10 माइक्रोमीटर से बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आ ही नहीं सकते. दे कैन बी ट्रैप्ड एंड दे कैन बी रिलीज. बट सम स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज लेस देन 10 माइक्रोमीटर, दे पास थ्रू द नेजल कैविटी, राइट? इट इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ना. इफ दे पास थ्रू द नेजल कैविटी दे आर रीचिंग टू द लंग, बट ऐसा नहीं है. हियर देर इज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. सेकेंड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि जिसमें देर विल बी अ म्यूकोसीलियरी ब्लैंकेट दैट कोट्स द म्यूकोसल सरफेस ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. पूरे सरफेस में वहाँ पे लोअर पोर्शन में म्यूकस सिक्रेटेड होता है, वहाँ पे जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं. वो एक बार ट्रैप्ड हो गए, वहाँ पे चिपक गए, उसके बाद सीलियरी मोशन से सी इफ दे एंटर्ड, आई विल चेंज द कलर. If small microorganism pass this nasal cavity and they come here only, right? In this area there is a coating of a mucus. On those coating the microorganism will be sticked. Once it is sticked through ciliary motion, उसको आप बाहर वापस ऊपर की upper respiratory part में पास कर सकते हो and they can release them. If
that microorganism skipped that portion also and they entered in the lungs. ये जो देखो, ये पहला तो ये फर्स्ट मैकेनिज्म हो गया, उसको इन्वेड करके अगर वो यहाँ पे आ गया सेकंड जगह पे, अगर इसको भी इन्वेड करके वो फिर यहाँ पे थर्ड जगह पे आ गया. सो हियर दिस लंग्स आर मेड अप ऑफ alveoli, right? So in alveoli there is a special kind of macrophage. These are the cells of immune system, macrophage cells. Special macrophage are present here. अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे भी करके यहाँ पे आ गए तो दिस macrophage get activated. This macrophage are called as alveolar macrophage. They will digest the microorganism. This alveolar macrophage, what they will do, these are the big cells, they can trap this tiny microorganism and then digest it, that this by the process of phagocytosis. So this is how your respiratory system is being protected.